मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के त्याग, समर्पण और शहादत का गौरवशाली प्रतीक है राष्ट्रीय समर स्मारक। आजादी के बाद के युद्धों और ऑपरेशंस में जान देने वाले लगभग 26,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट के ठीक सामने बनाया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल। 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक देश को समर्पित किया। ये उन शहीदों को नमन करने का अनुपम माध्यम है जिन्होंने अदम्य साहस और पराक्रम के साथ सर्वोच्च बलिदान देते हुए तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखा। चक्रव्यूह रचना से प्रेरणा लेते हुए 40 एकड़ के क्षेत्र में राष्ट्रीय समर स्मारक का निर्माण किया गया है। इसे मुख्य रूप से 4 चक्रों में डिजाइन किया गया है। अमर चक्र केंद्रीय चक्र है और बीचों बीच स्थित है। ये अमरता का प्रतीक है। इसके केंद्र में एक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है। ये 15 मीटर ऊंचा स्तंभ दिखाता है कि देश के सैनिकों का हौसला अटल और अडिग है। वीरता चक्र में दीवारों पर बनी कांसे की कलाकृतियों में भारतीय सेना के तीनों अंगों की वीरता की कहानी प्रदर्शित है। इसके बाद है त्याग चक्र। यह बलिदान को प्रदर्शित करता है। 25,942 योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट का उल्लेख ग्रेनाइट पत्थर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में अंकित है। इसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना के शहीदों के नाम एक साथ लिखे गए हैं। सबसे बाहरी चक्र को नाम दिया गया है रक्षक चक्र, जो सुरक्षा को प्रदर्शित करता है। यहां परम योद्धा स्थल है, जो सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित 21 शहीदों की कहानी कह रहा है। इस स्मारक के माध्यम से राष्ट्र न सिर्फ उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, साथ ही उनकी वीर गाथाओं से प्रेरित भी हो रहा है। The National War Memorial, a tribute to honor the martyrs who sacrificed their lives for independent India. The arrival of the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh. माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का आगमन राष्ट्रीय समर स्मारक पर, उनका स्वागत रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार द्वारा, साथ में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी द्वारा। राष्ट्रीय समर स्मारक हमें उन बहादुर सैनिकों के अप्रतिम शौर्य, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। कुछ ही समय के उपरांत यहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और वे कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को राष्ट्रीय समर स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। The War Memorial, where are displayed more than 26,000 names of soldiers who've displayed distinguished acts of valor during wartime. Unveiled on the 25th of February 2019, the memorial has 4 concentric circles and a central obelix under which burns the eternal flame representing the immortal soldiers. देश प्रेम, कर्तव्य परायणता, असाधारण वीरता और शूरवीरता भारतीय सेना की सारी दुनिया में गौरवशाली परंपरा और पहचान, और उसी को परिलक्षित करती ये अमर जवान ज्योति राष्ट्रीय समर स्मारक पर आज के इस राष्ट्रीय पर्व का अभिन्न अंग।
समर स्मारक पर तीनों सेनाओं का संयुक्त दस्ता है, जिसका नेतृत्व नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर अमित कुमार राठी कर रहे हैं। समर स्मारक में त्याग चक्र में 2 मीटर लंबी दीवार पर 26,000 से ज्यादा शहीदों के नाम उकेरे गए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की परंपरा को आगे बढ़ाया। Hallowed grounds where are enshrined more than 26,000 names of those who've sacrificed themselves for the nation. A proud moment for every citizen as we pay homage to our soldiers who have given us our today and our tomorrow. The Prime Minister will arrive at the National War Memorial in a short while. As the flags of the three services flutter, the mood here is one of pride and solemnity. The buglers will sound the rouse as we celebrate the lives of our martyred soldiers and pay respect to the sacrifices made by them. A grateful nation paying homage on this 73rd Republic Day, commemorating 75 years of independence. A new memorial that has been designed as a chakra view, an ancient Indian war formation, and you have the circle of immortality, Amar Chakra, the circle of bravery, Veerta Chakra, circle of sacrifice, Tyag Chakra, and the circle of protection, Rakshak Chakra. Everyone standing at attention, waiting for the Honorable Prime Minister to join the nation as we pay homage. राष्ट्रीय समर स्मारक पर हमारा तिरंगा शान से लहराता हुआ, साथ में तीनों सेनाओं के ध्वज, नौसेना, थल सेना और भारतीय वायुसेना का झंडा। समर स्मारक पर 4 चक्र बनाए गए हैं, जिनमें आजादी के बाद भारतीय सेना की भागीदारी वाले 6 युद्धक अभियानों की जानकारी दी गई है और हर देशवासी यहां पर आकर गौरवान्वित महसूस करता है। समर स्मारक पर तीनों सेनाओं का संयुक्त दस्ता है। नेतृत्व कर रहे हैं नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर अमित कुमार राठी। वायुसेना दस्ते का नेतृत्व संभाला है स्क्वाड्रन लीडर आकाश गंगस ने। बहुत ही खास अवसर हर उस व्यक्ति के लिए जिसने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस राष्ट्रीय पर्व का हिस्सा बनने का गौरव हासिल किया है। सर्वोच्च बलिदान के प्रतीक अमर जवान को याद करती ये ज्योति जो यहां पर सतत प्रज्वलित रहती है। The Inter-Services Guard, formed by 7 soldiers from each service, commanded by Naval Officer Lieutenant Commander Amit Kumar Rathi. And you can see the cavalcade of the Prime Minister moving towards the National War Memorial, where he will be received by the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh. The pilot cars moving swiftly down the path that leads to the National War Memorial. Spread over 40 acres of land, this solemn homage, a national monument built to honor and remember soldiers of the Indian military who fought in armed conflicts of independent India.
राष्ट्रीय समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह उपस्थित माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत के लिए समर स्मारक पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, अभिवादन थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी द्वारा। राष्ट्रपति महोदय आज राजपथ पर सलामी लेंगे और उसके पहले राष्ट्रीय समर स्मारक पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शत शत नमन, श्रद्धा सुमन अर्पण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। The Honorable Prime Minister, accompanied by the Raksha Mantri Shri Rajnath Singh and the three chiefs, together walking to the memorial where soldiers of the three services are positioned in formation to pay tribute to the fallen soldiers. He will offer a wreath of remembrance on behalf of a grateful nation. A very solemn ceremony that takes place and actually heralds the beginning of the celebrations at Rajpath. The Honorable Prime Minister with the wreath of remembrance now. एक बहुत ही भावुक और ख़ास अवसर, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को याद करने का, उनके प्रति नमन का।
The buglers sounding the rouse and the guard commander, Lieutenant Commander Amit Kumar Rathi, ordering Salami Shastra, salute with arms, marking the completion of the 2-minute silence. Silence which eclipses words but says it all, making time stand still but gratitude toll, letting our prayers lift in silent song, our faith in our soldiers ever strong. Time moves on, leaving in its wake stories, memories and heroes. And here at the National War Memorial, we commemorate those countless unsung warriors who gave their today for our tomorrow, their sacrifice given selflessly, soulfully and seamlessly. We owe them a deep debt of gratitude. And on days like today, a whole nation comes together in acknowledgement. And leadership, they say, is practiced not so much in words as in attitude. Attitude, in fact, colors your thoughts, words and actions constantly. Honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication and valor is leadership in its most humble form. हमारे आज के लिए अपना बलिदान देने वालों को शत शत नमन। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक की डिजिटल आगंतुक पुस्तिका में अपनी अभियुक्ति दर्ज करेंगे। True respect belongs to all those who don't think twice about fighting for what they believe in with all their heart. And today, as we show our respect and gratitude to those who strove valorously in their tasks, who did not look for saviors or shortcuts, who found something that mattered more than fear or petty personal gain and were ready to offer themselves for what was asked of them. Hardship, hesitation, uncertainty, fear and failures can cause anyone to quit. But these were people who did not quit. They let their daring, judgment, instincts and willingness to overcome obstacles push them beyond their boundaries of comfort. Prime Minister Narendra Modi penning his thoughts in the digital ceremonial book here and taking his leave from the National War Memorial. And as the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. साहस, वीरता और बलिदान की समृद्ध परंपराओं ने भारतीय सेनाओं को और सुदृढ़ किया है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने सदैव राष्ट्र के प्राचीन विचारकों, इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से प्रेरणा पाई है। इन सभी ने हमारे जाबाजों को युद्ध और शांतिकाल के समय के लिए बेहतर रूप से तैयार होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। Prime Minister Narendra Modi being seen off from the National War Memorial, from where his carcade will now move towards the saluting base for the beginning of the parade.
the National War Memorial a memorial of faith, enabling us to remember and respect the sacrifice of those who fought for the country. Right now, as the Honorable Prime Minister was paying tribute at the National War Memorial, the cadets of the National Cadet Corps are paying tribute to the soldiers of the country who laid down their lives in the service of the nation since independence. As a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav, the NCC has undertaken the mega event Shahidon Ko Shat Shat Naman throughout the nation to remember the supreme sacrifice of the brave hearts in defending the nation, conveying the nation's gratitude. The cadets also presented a memento. At the beginning you saw to the father of the Kargil war, hero Major Vikram Batra, Paramveer Chakra. And here at Rashtrapati Bhavan, the departure of Prime Minister of President Ramnath Kovind for Rajpath. The Supreme Commander of the Armed Forces, the President, will now, escorted by his bodyguards, leave the forecourt of Rashtrapati Bhavan and head towards the saluting base. भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद कुछ ही समय के उपरांत प्रस्थान करेंगे राजपथ की ओर। दरबार हॉल से निकलकर प्रांगण की सीढ़ियों से आगे प्रस्थान कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय, और राष्ट्रपति जी को एस्कॉर्ट कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव, ग्रुप कैप्टन अभय फनसनकर, राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव एडीसी मेजर गोपाल सिंह पूनिया और लेफ्टिनेंट कमांडर पारस सिंह। Rashtrapati Bhavan, home to the president of the world's largest democracy, epitomizing India's strength, its democratic traditions and secular character. It is rightly said, nature and man, rock and architecture have rarely collaborated to so fine a purpose as in fashioning the magnificent Rashtrapati Bhavan. The main gates of the Bhavan open to a stately path called the forecourt that leads to the main building. This forecourt is used for ceremonial receptions of visiting heads of state and government, as also for the change of guard ceremony. In fact, it was here where the swearing-in ceremony of the Prime Minister, Shri Narendra Modi, and his Council of Ministers took place. Rashtra salute, Madhya Pradesh. The President of India, Shri Ramnath Kovind, boarding his vehicle, from where, escorted by his bodyguard, he will arrive at the saluting base. The President's bodyguard on their magnificent bay and dark bay-colored mounts, raised in 1773, the senior-most regiment of the Indian Army. The Commandant of the President's bodyguard, Colonel Anup Tiwari, will be riding to the right of the President's car, leading this elite body of horsemen mounted on his charger Virat. In fact, Virat has been awarded with the Chief of Army Staff's commendation on the occasion of Army Day 2022 and is the first charger horse of the President's bodyguard to receive the commendation card.
Virat is a veteran of over 13 Republic Day parades, as the charger is escorting the Honorable President of India. And today is his last Republic Day parade as he gracefully retires after being the most trusted steed over the years. And here at the saluting base, after paying tribute to the immortal soldier at the National War Memorial, the arrival of Prime Minister Narendra Modi. माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन हो चुका है सलामी मंच पर। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष से मिलने के बाद वे अब यहां उपस्थित अतिथियों का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ते हुए कुछ ही देर पहले कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी और अब गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह स्थल राजपथ पर सलामी मंच के निकट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और यहां उपस्थित लोगों से मिलते हुए। The attendance is limited, as we shared with you earlier, due to COVID protocols. The Prime Minister walking into the enclosures on either side of the saluting base and greeting the people there. It's always a proud moment for the leader of the government of the largest democracy in the world as he witnesses the diversity, the tapestry of fabric, this multicultural, multilingual nation is. Prime Minister Narendra Modi will now await the arrival of the President of India, Shri Ramnath Kovind, as they come from the direction of Rashtrapati Bhavan towards the saluting base. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब धीरे धीरे सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए और ये सुस्वागतम की धुन जो संकेत दे रही है कि अब कुछ ही पलों में राष्ट्रपति महोदय सलामी मंच पहुंच रहे हैं। As the strains of Suswagatam resonate here at Rajpath, these are beautiful visuals, lovely shots brought from our specially placed cameras. As we shared earlier with you, Doordarshan has made very special arrangements, and the strategic placement of cameras is one of them. And here at the saluting base, the arrival of Mrs. Savita Kovind, the President's wife. The stately cavalcade of the President of India. The red and white pennants of the President's bodyguard fluttering in the air.
the sun taking the nip out of the early morning air, but a breeze stirring up fervor and spirit. राष्ट्रपति के अंगरक्षक न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व की सभी रेजिमेंटों में अद्भुत एवं विशिष्ट हैं। और अब महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सलामी मंच पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद राजपथ पर भव्य परेड शुरू होगी और उसकी सलामी लेंगे तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर महामहिम राष्ट्रपति। Arriving at the saluting base, the President of India, Shri Ramnath Kovind, greeted by the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. The head of the government and the constitutional head being greeted here by the Raksha Mantri, the three service chiefs, माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन हो चुका है। सलामी मंच पर स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी द्वारा। देश की सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हमारे राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद आज माननीय राष्ट्रपति द्वारा देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले शूरवीर को वीरता अलंकरण प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक बाबूराम को असाधारण शौर्य और साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान किया जाएगा। देश का 73वां गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय उत्सव हर भारतीय के लिए गौरवान्वित होने का अवसर। the national anthem and the 21-gun salute. गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर राष्ट्रीय पर्व मनाने